Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So in this lecture, we will study about the nature of Indian economy. The nature of Indian economy is that India is underdeveloped or developing country. Please note that these two terms are often used interchangeably. Underdeveloped or developing is one and the same thing. So, what are the features or characteristics that make India an underdeveloped country? The features are low standard of living, scarcity of capital, high unemployment, high poverty, high inequalities, high regional inequalities, dualistic economy, predominance of agricultural sector, huge population with moderate growth rate of population, and low level of well-being. These are some of the most important characteristics of Indian economy. Now we will study these features one by one. The first one is the low standard of living. The standard of living is measured by GNI per capita on the basis of PPP exchange rate, purchasing power parity exchange rate. India's gross national income per capita is USD 7,000 approximately. Please note here that PPP exchange rate and market exchange rate are not one and the same thing. At present, market exchange rate is around $1 equals to 74 or 75 Indian rupees. However, PPP exchange rate is different. On PPP basis, $1 comes to near about rupees 19. इसका मतलब ये है कि सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स खरीदने के लिए अगर यूएसए में $1 देना पड़ता है तो इंडिया में सिर्फ 19 रुपये ही देने पड़ते हैं. सो यहाँ पर जो हम GNI पर कैपिटा देख रहे हैं दैट इज़ इन PPP बेसिस. अगर हम दूसरी कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम मेजर करें या देखें तो यूएसए का है $65,000, चाइना का है $16,800 और जो वर्ल्ड एवरेज है दैट इज़ अराउंड 17,700. सो वी कैन सी दैट चाइना का जो GNI पर कैपिटा है ऑन PPP बेसिस इट इज़ क्लोजर टू वर्ल्ड एवरेज एंड आवर्स इंडियाज इज़ quite below. It is around $7,000. And due to lower per capita income, we have lower standard of living. The next feature of Indian economy is scarcity of capital. Capital means plant, machinery, equipments, etc. India has less capital vis-a-vis other resources. किसी भी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स कम होंगे तो इससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ता है. टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीनरी यूज़ करने से जो लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. रॉ मटेरियल यूज़ करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है. इफ़ ए कंट्री हैज़ लेस कैपिटल देन अदर रिसोर्सेज विल बी सब ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड एंड देयरफॉर द इकोनॉमी विल नॉट फंक्शन एट फुल कैपेसिटी. The next feature of Indian economy is high unemployment. We will study employment in greater detail in the upcoming lectures. The next feature of Indian economy is high poverty. Around 1/5 of the Indian population is below the poverty line. 21.9% of the Indian population is poor. It is important to mention here that India's criteria for poverty is also quite low. इंडिया के अंदर हाई पॉवर्टी है और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी मेजर करने का क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी लो है. फॉर एग्जांपल इन 2011-12 people who were earning below rupees 30 were in an urban area were categorized as poor. तो 2011-12 के अंदर जो अर्बन पॉवर्टी लाइन थी वो 32 रुपये थी. इफ़ एनी पर्सन लिविंग इन अर्बन एरिया अर्न्स less than 32 rupees in 2011-12 then he will be categorized as urban poor. 32 रुपये बहुत कम होता है और 32 रुपये की क्राइटेरिया लेने के बाद भी हमारे पास 1/5 of India's population is poor. The next feature of Indian economy is high inequalities. हमने पिछले लेक्चर्स में कुज़नेट्स कर्व पढ़ा था. क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम लो है इसलिए यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ भी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज़. ऑल्दो जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी देखी जाती हैं बट इन जनरल इनइक्वालिटी इज़ अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज.
The next feature of Indian economy is high regional inequality. इंडिया के अंदर there are regional inequalities in north and south, south being more advanced on human development indicators than the north India. इसी तरह रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के अंदर भी इनक्वालिटीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इसीलिए कई बार हम ये भी कहते हैं कि देयर इज़ अ इंडिया वर्सेस भारत contradiction which highlight the regional inequality in India. The next feature of Indian economy is dualistic economy. In dualistic economy, the modern sector and the traditional sector exist side by side, and there is a sharp difference between modern and traditional sector in terms of resource utilization, in terms of efficiency, etc. So in India, there exists a sharp difference between modern sector such as automobile service sector and traditional sector such as agriculture, handmade, textile, etc. The next feature is predominance of agriculture sector in India. In India, there is predominance of agriculture sector. Although at present, agriculture contributes to around 16% of Indian GDP, but its contribution to the employment in India is around 46%. That means that 46% of Indian population is dependent on agriculture and which contributes only 16% of GDP. Although over a period of time, India's production, agriculture production has increased and we have become self-reliant in terms of food, but the share of agriculture in total economy has decreased. It is because the industry sector and the services sector have grown at a much faster rate than the agriculture sector. Let us see the data. At the time of independence, agriculture's contribution to the GDP was around 60%, industry around 18%, and services around 22%. But at present, as I have said earlier, agriculture's contribution to the GDP is 16%, industry sector contribution is 29%, and the service sector contribution is the largest, which is 55%. If we compare this with respect to any developed country, तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है उसके अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, अराउंड 1 to 3% ऑफ द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री. बट इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज 16%, विच इज़ हाई. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इंडिया जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और बढ़ता जाएगा और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी विल रिड्यूस फ्रॉम 16% टू फर्दर decline. It is seen generally in developed countries that agriculture contribution to the employment is only 3 to 5%. सिर्फ 3 से 5% लोग ही एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज. बट इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ी एनोमली है कि 46% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ऑल्दो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर sector has reduced in the economy, but agriculture production has improved steadily and we have become self-reliant in terms of food availability. But this huge employment dependence on agriculture sector is a cause of concern. Therefore, India should focus on industry sector as well as service sector for more job creation. अगर हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं देन वी हैव टू फोकस ऑन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर. हाउएवर सर्विस सेक्टर के अंदर जो लेबर लगती है इट इज़ वेरी लेस लेबर इंटेंसिव. लेस पीपल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सर्विसेज. देयरफॉर इंडस्ट्री सेक्टर को और आगे बढ़ाना होगा ताकि जॉब क्रिएशन हो. दैट्स वाई आवर गवर्नमेंट ट्राइज टू improve manufacturing sector through program initiative like Make in India, etc. Now, why agricultural income is low? इसका आंसर इस डेटा के अंदर है. अगर हम देखें 46% of the population is dependent on agriculture and it contributes to 16% of GDP. Therefore, nearly half of the population is dependent on agriculture, which contributes to only 16% of GDP. That's why agriculture income is low in India. बिकॉज टू मैनी पीपल आर रिलायंट ऑन एग्रीकल्चरल इनकम. इंडिया में 1947 से अब तक जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, वो अराउंड 3% रही है और गवर्नमेंट का टारगेट रहता है, दिस इज़ द एनुअल ग्रोथ, 3% एनुअल ग्रोथ.
और गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि ये जो ग्रोथ है ये अराउंड 4% होनी चाहिए, जिससे कि जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं उनकी इनकम बढ़ सके। द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ ह्यूज पॉपुलेशन विद मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर ह्यूज पॉपुलेशन है और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो मॉडरेट है। जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है वो लो होता है और उनकी पॉपुलेशन भी कम होती है। चलिए इस पॉपुलेशन की डायमेंशन को स्टडी करते हैं थ्रू द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक transition by Nordestein and Thompson. This theory talks about demographic transition. There are different stages of demographic transition which a country goes through. The first stage is the stage of high birth rate and high death rate. और इसके कारण जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो भी लो होती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर वी कैन सी जो फॉरेस्ट ट्राइब्स होती हैं उनके अंदर बर्थ रेट और डेथ रेट उनका हाई होता है, इसलिए उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी लो होता है। इसका कारण ये है डेथ रेट इज़ हाई बिकॉज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब डेथ रेट हाई होता है देन पीपल प्रोक्रिएट मोर चिल्ड्रन, लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि अगर 4-5 बच्चे पैदा किए और 2-3 की डेथ भी होगी देन दे आर नॉट चाइल्डलेस इन दैट केस। इंडिया के अंदर भी आज से 50-60 साल पहले बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा थे, जिस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ भी लो थी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो डेथ रेट होता है इट बिकम्स लो। वाई लो? बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डेथ रेट तो लो हो गया लेकिन बिकॉज ऑफ सोशल कल्चरल फैक्टर्स पीपल स्टिल प्रोक्रिएट मोर चिल्ड्रन एंड द बर्थ रेट इज स्टिल हाई। अब टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से डेथ रेट तो कम हो गया लेकिन बर्थ रेट पे अभी भी कंट्रोल नहीं हो पाया। इस कारण से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेज, एक्सपेंडिंग, एंड देयर इज़ अ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। दिस इज़ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज श्रीलंका, केन्या, पेरू। The third stage of demographic transition is where the birth rate is low and the death rate is low, and here the population growth is also low, and this is the third stage generally seen in the case of developed countries, example Canada, USA, Japan. The third stage, India is somewhere between the second stage and the third stage. Our population growth rate is not high, it is moderate. The second theory associated with population is the Malthusian theory of population. It was given by Thomas Robert Malthus. This theory says that the population grows in geometric progression, however the food supply grows in arithmetic progression. Malthusian theory ये कहती है कि जो population होती है वो geometric fashion में increase करती है और जो food supply है वो arithmetic fashion में increase करती है। हमें पता है कि जो geometric प्रोग्रेशन है दैट इज़ फास्टर देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अर्थमेटिक मतलब 1 + 2 + 3 एंड ज्योमेट्रिक इज़ 1 × 2 × 3, तो मल्टीप्लिकेशन इंक्रीजेज फास्टर देन द एडिशन। देयरफॉर फूड सप्लाई इंक्रीजेज एट अ स्लोअर रेट देन द पॉपुलेशन। तो माल्थस का ये कहना था कि भाई दिस इज़ अ नेचुरल चेक ऑन पॉपुलेशन इंक्रीज। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फूड सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं होगी और इससे क्या है, पीपल विल डाई ऑफ हंगर, और ये नेचुरल चेक होगा पॉपुलेशन इंक्रीज पर। हाउएवर प्लीज़ रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली ए थ्योरी, ऐसा प्रैक्टिकलिटी हमने नहीं देखा है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इंडिया एंड चाइना पॉपुलेशन तो बहुत इंक्रीज होगी लेकिन फूड भी सेल्फ सफिशिएंट प्रोडक्शन रहा है। सो माल्थुसियन थ्योरी इज जस्ट ए थ्योरी। द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज द लो लेवल ऑफ वेलबींग। नाउ वेलबींग इज अ मच ब्रॉडर डायमेंशन देन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेलबींग के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको मेजर किया जाता है एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एट्सेट्रा। एंड इन इंडिया देयर इज़ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ and which can be seen from India's ranking in Human Development Index, World Happiness Report, etc. So these were the important features of Indian economy.